Hello student, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiosia School, Agra. Students, today I am going to take the next lesson of class 11, chapter 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें जो आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज अबाउट कंटेंट ऑफ द चैप्टर। Personality, its definitions and type, trends and types. Next, motivation and its types of technique. Next, exercise, adherence, region of exercise, benefit of exercise. Next, strategies for enhancing adherence of exercise. Next, meaning, concept and type of aggressions in sports. So students, personality and its definitions and type, trends and type. एंड मोटिवेशंस इट्स टाइप एंड टेक्निक्स मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज मैं आपको एक्सरसाइज एडरेंस रीजन्स टू एक्सरसाइज बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज बताऊंगा। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज ऑफ एनहेंसिंग एडरेंस ऑफ एक्सरसाइज बताऊंगा। मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ अग्रेशंस इन स्पोर्ट्स ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यूज अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter, exercise adherence regions to exercise benefits of exercise बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज एडहेरेंस इज कॉम्बिनेशन द टू वर्ड्स एक्सरसाइज और एडहेरेंस। यानी एक्सरसाइज मीन्स एनी मूवमेंट दैट मेक देयर मसल्स वर्क एंड रिक्वायरिंग ऑफ बॉडी एंड बर्न कैलोरीज। यानी इसमें हम अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। एंड वेदर एडहेरेंस मीन्स होता है स्टिक। यानी एक्सरसाइज एडहेरेंस refers to maintaining an exercise and regiment or the prolonged period is the time following initial adaptation phase. It can be said, हम कह सकते हैं कि exercise is striking for the daily exercise and goal. It can also defined as the maintenance of the activities involved in the physical exercise. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजन ऑफ एक्सरसाइज, इसका रीजन क्या होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि एवरीवन इज वेल अवेयर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सरसाइज, सबको पता है। एंड बट डू नॉट नो वेल द रीजन ऑफ एक्सरसाइज। इन फैक्ट मैनी ऑफ अस आर अवेयर अबाउट द रीजन ऑफ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इनहेंस्ड फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं कि नॉट ओनली एक्सरसाइज हेल्प फॉर द फील बेटर बट इट इज ऑल्सो एंड लुक बेटर एज वेल। हाउएवर जेनेटिक एंड प्ले इन द मेजर रोल ऑफ आवर फिजिकल एंड ओवरऑल अपीयरेंस। Everybody want to have the good as well as healthy and physical appearance. Exercise can enhance the physical as well as overall appearance. They are very exercise is important. Next, improved psychological emotions health. The improvement psychology emotions and birth also require region of exercise, but exercise has been proven of the provide of mood booster and release chemical and endorphins into our brain, and that help us the feel happier, can easy effect of depression. Next, feel more energy। एनर्जाइड में कहते हैं कि ऑन द रीजन ऑफ द एक्सरसाइज रेगुलर दैट गिव अस द मोर एनर्जी ऑफ फील मोर एनर्जाइड। इंडीड a work can help oxygen flow more freely throughout the body and give us such needs burst of energy. The burst of energy is not occur during the exercise but also after exercise, यानी एक्सरसाइज के बाद भी बर्न होती है। सेकेंड, डिस्क्रीज रिस्क ऑफ डिसीज। तो decreasing of risk and disease is also one of the region of exercise. At the matter of fact, exercise builds the important curriculum in the white blood cell, which are need is the get rid of harmful bacteria and cause of the cholestics, the boost is immune system and make more identity disease or illness. Second, for controlling body weight, यानी इससे हमारा बॉडी वेट कंट्रोल होता है एक्सरसाइज से। तो कंट्रोलिंग बॉडी वेट इज द अनदर रीजन ऑफ एक्सरसाइज। इट इज द डन रेगुलरली, इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड मैनेज योर बॉडी वेट। इन फैक्ट, एक्सरसाइज बर्न कैलोरीज
and which result is the shedding of the extra body weight. Next, for long term health. Gaining long term health also gain of the reason of exercise. Regular exercise can avoid very cardiovascular disease, diabetes, etc. At the long term, working is the regular increasing good cholesterol and decrease the risk of serious medical issues, जैसे heart. Especially these uh, partings of heart and even have been prone through the research studied exercise add year of the life. Next, for improved social relations. Improved social relations also mourn of the significant role of exercise. For good health and social relations are essential by joining exercise group of the class such as dance, hiking clubs, volleyball team. Our social relations are important. Second, improve physiological health and fitness. Attaining the process of physiological health and fitness region exercise. Regular exercise improve the physiological health. It is system of the body becoming efficient and the fitness individuals improve in the regular exercise. Next, students, जो आएगा बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज. तो बेनिफिट क्या क्या होते हैं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर फॉलोइंग एंड प्रे द वेरियस लाइफ स्टाइल डिसीज. इन फैक्ट they do not perform regular exercise. Most of them are not well aware regarding the physical, psychological, social and psychological benefits of exercise. तो सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज बताएंगे कि reduce the risk of heart disease. The regular exercise gradually reduce the stress related the hormones and be circulating in the blood system. Increase of blood vessels path, which is the one lower and the risk of development and plaque and lead of disease such as coronary heart disease. Next, help in keeping correct body posture. The strength of muscles increase, which is the turn and keep is the body posture in correct position, and also postural deformities do not occur. And if they any postural deformities, and it is the removed by energetic of exercise. Second, improves mood. Improves mood में क्या होगा? Exercise make most individuals feel good, and when they feel good their good energies and seems to elevate. This is the consideration for due of the release hormones called endomorphin, and it is the research studies indicating that the individuals who perform regular exercise have the more positive and outlook their life and happiness circumstances that do not exercise. Second, boost memory. बूस्ट मेमोरी में क्या होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज एंड बूस्ट मेमोरीज एंड एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई विचार आना. रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजिंग हिप्पोकैम्पस सेल्स एंड द रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग. नेक्स्ट, रिड्यूस डिप्रेशन. हम कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज कैन ग्रेट रिड्यूस डिप्रेशन एंड इन सम केसेस प्रिवेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. यानी एरोबिक एंड एनोबिक एक्सरसाइज सीम टू एक्चुअली एन इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटी डिप्रेशन इफेक्ट्स. नेक्स्ट, लोअर एंजाइटी यानी भय के लिए तो कह सकते हैं हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो रिड्यूस द लोअर एंजाइटी, भय खत्म होता है. एंड लेवल ऑफ एंडोर्फिन इंक्रीजिंग ड्यू टू द रेगुलर एक्सरसाइज. द फीलिंग ऑफ वरी ऑल्सो विंग्स इन द dismiss. And during exercise usually forget and daily problem and be concentrate on our workout, begin fresh perspective in situations. Next, strength bones and muscles. क्षमता बढ़ती है हमारी बोन्स की, मसल्स की. तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू स्ट्रेंथिंग द becomes bones and muscles. It can be also in loss in bone density and becoming with the age. Doing muscles strengthening exercise help increasing the maintain muscle mass and strength. Exercise stimulate bone growth. Next, improve mental alertness. The stress, tension, fatigue and negative affect concentration, comprehension and memory.
Since exercise is the best way of reduce stress and improve energy level, the regular exercise will enhance mental alertness. Next, reduce stress. तनाव खत्म होता है तो number of studies and how to show regular exercise help individuals to manage stress more effectively. It is the one of the best method of reducing and mentions exercise helping the relieving stress and release endorphin and aerobic exercise are good for reducing stress. Next, enhance self-esteem and improve self-confidence. It is usually seen as the most of the pupils feel unhappy and dissatisfied about the physical appearance. After regular exercise, most of the pupils begin to see positive physical changes. After having seen is the result, they tend to feel proud of the success. Next student आएगा stages of enhancing adherence of exercise. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि they may have to real and bad for perceived problem and worries such as lack of time, lack of social support and lack of energy, and lack of willpower and lack of self-efficiency. Confidence is their ability to perform exercise successfully. Lack of access of facilities. स्टूडेंट इसमें सिंपल एक्सरसाइज इन द बिगनिंग, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि डू द सिंपल एक्सरसाइज motor development in complex. It is the applied those freshness in the notice as a matter in fact the simple exercise yani workout such as walking, jogging, yoga etc should be done in the beginning, and the exercise required no equipment and no access, and these exercise requiring only track suit and pair of shoes. These are not complicated with simple one. Next, exercise of morning. हम कह सकते हैं कि doing exercise for morning and more fresh and energetic than the evening. Next, concentration only for the yourself rather than other. Next, set appropriate achievable goal. Next, take place in other for exercise more perfectly and to get is the good company with someone, and thank for your are successfully to doing exercise regularly. Select interest exercise for yourself and be punctual. Make a schedule. Be aware about your progress. Next, variety of exercise program. नेक्स्ट स्टूडेंट जो टॉपिक है वो मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ अग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो क्या है, द टर्म aggression refers to range of behavior that can result of the both physical and psychological term of one's other the objects of the environment. This type of social interactions enters or harming another individuals either physically and mentally. As a matter of fact, most of the person view aggressive as the negative psychological characteristics, and however some sports psychologists agree and suggestions can enhance their sports performance. The aggression in the field of sports and games and come out in the frustration which arise done of goal ब्लॉकेज। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एनी फ्रॉम द बिहेवियर डायरेक्ट टुवर्ड्स द गोल एंड हार्मिंग फॉर इंजरिंग एंड अदर लिविंग बींग्स हु इज द मोटिवेटेड एवर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये बोरन ने कहा था। अब टाइप ऑफ अग्रेशन इन द स्पोर्ट्स, तो अग्रेशन के टाइप क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले होलिस्टिक अग्रेशन। तो होलिस्टिक में क्या होता है कि इट इज़ द इन्फेक्टिंग इज द कॉसिंग हार्म्स एंड विद इज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल समवन एज इट इज समवन रिफर्स टू द react aggressions can be comprised by anger, the tension and causing pain and suffering. Next, instrumental aggression. It is displaying aggression behavior in the pursuit and non-aggressive goal. It is only known as the challenged aggression and it is not complied by anger. Second, assertive behavior. It is a different type of
aggressions of aggression behavior. It is defined as the behavior that involves the legitimes physically and verbal forces of the achieved person, and any physical injury that may occur through the assertive behavior in the accidental or unintentional.